In the 20 years since 9/11, the U.S. has spent over $2 trillion on the war in Afghanistan. That's $300 million per day, every day, for 2 decades. Or $50,000 for every person in Afghanistan's population of 40 million. You could also look at it this way. America has spent more trying to keep the Taliban at bay than the net worths of Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, and the 30 richest billionaires in America all put together. $800 billion was allocated to direct war-fighting costs. $85 billion was spent to train the Afghan military, which ended up folding and surrendering in the weeks since the Pentagon closed Bagram Air Force Base in July. This effectively removed American air support against the Taliban. $750 million a year was allocated to salaries for Afghan soldiers. And then there's the human cost. 47,000 Afghan civilians dead, 69,000 Afghan security forces, over 3,500 coalition troops, 2,500 of them U.S. military personnel, 4,000 U.S. contractors. Figures for dead opposition fighters are estimated at around 51,000. The cost so far to care for the 20,000 Americans wounded in the conflict has been about $300 billion, with another $500 billion or so expected to come. The United States financed the war with borrowed money. Researchers at Brown University estimate more than $500 billion in interest has already been paid. They think that by 2050, the cost of interest alone on our Afghan war debt could reach $6.5 trillion. That equals about $20,000 for every U.S. citizen. Did you know it ain't got nothing to do with the Taliban and women wearing burqas? This thing that covered a woman all up. America acting like she's defending women. When you walk in the street with your behind out, ain't a damn soul saying nothing to you. But you gonna defend women in Afghanistan who cover? And you are uncovering your woman, making her look like a prostitute. Ain't nobody saying nothing to you. He's not a defender of the modesty of women. He used that as an argument to sway the American people against the quote-unquote Taliban. You know what the word Talib means? It means student. Taliban, the students of Allah, students of His word, students of His prophet, students of His way. They don't want nothing but God's way. That's the war that's going on in the world today. Is if you want to obey God, over here. If you want to obey God, over here. If you want to keep doing the mess that you're doing over here, and God intend to kill. पाक फौज और आईएसआई ने पाकिस्तान को यौम आज़ादी पर बड़ा तोहफा दिया। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई को मुबारकबाद। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद भारतीय आर्मी के साबिक एहलकार और दिफाई तज्जियाकार कर्नल धनवीर सिंह का बयान सामने आया है। कर्नल धनवीर सिंह ने यह भी कहा है कि भारत की हालत उस लड़के की है जो 2 सूरमाओं की लड़ाई में ख्वामख्वाह चांटे खाकर रोता हुआ घर आ जाता है। इन सारे ऑपरेशंस में सबसे अहम ऑपरेशन जो था वो इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। आईएसआई की दाद देनी चाहिए। आईएसआई ने बहुत ही शानदार काम किया। उन्होंने जितने भी ये प्रोविंसेस के जो गवर्नर्स थे, जितने भी वहां पे वॉरलॉर्ड्स थे, उनके साथ में सांठगांठ बिठाई, उनको अपने साइड में लिया। और यहां तक भी सुनने में आ रहा है कि अफगानिस्तान फौज के जर्नैल तक उन्होंने तोड़ लिए और उनको भी अपने साथ मिला दिया। गनी सरकार ने जो गवर्नर अपॉइंट किया वो मजे से सोफे पे बैठा हुआ है और तालिबान
का जो शैडो गवर्नर है उसके साथ बैठ के और फल फूल आहार ले रहा है। बिल्कुल क्लियर है, ये वाजे हो जाता है कि ये गवर्नर्स, अफगानिस्तान आर्मी के जर्नल, वहाँ के वॉरलॉर्ड, ये ISI उनको तोड़ने में कामयाब रही और ये उनके साथ शामिल हो गए। वर्चुअली कोई भी लड़ाई लड़े बगैर तालिबान अब 90% अफगानिस्तान के ऊपर काबिज है। वहीं हेरात के अंदर, हेरात के शेर माने जाने वाले इस्माइल खान, वो भी तालिबान के साथ खड़े नजर आए और सुनने में आया है कि वो भी तालिबान के साथ मिल चुके हैं। पाकिस्तान फौज को मुबारकबाद देनी चाहिए कि उन्होंने अपने यौम आज़ादी के दिन एक इतना बड़ा तोहफा पाकिस्तान की आवाम को दे दिया। और भारत की स्थिति इस समय बहुत ही गंभीर है। एक उस तरीके से है जैसे कि गली में एक लड़का दो गुटों की लड़ाई में खाम पिट जाता है और रोते रोते अपने घर आ जाता है। तो बिल्कुल दो बड़े शक्तियों के बीच में, इलाकाई शक्तियों के बीच में झगड़ा चल रहा है। दैट इज तालिबान, मैं उसको बड़ी शक्ति मानूंगा। और पाकिस्तान एक तरफ और दूसरी तरफ अमेरिका, अफगानिस्तान की सरकार और सेना, और इनके बीच में लड़ाई चल रही है। और भारत ऐसे ही खाम चाटे चूटे खाकर रोते हुए, गाल मलते हुए वापस आ गया है। او په اغیار واورم اغیار ټول غوږونه خلاص کنن. پاکستان پاکستان پاک فوج درې نورې واورئ. اخري یوه بیا بله ناشده نه ده، ما ناشده د ټول واوري. نعره تکبیر. ارمان سے دا غاړه یې څه غټه وایي. نعره تکبیر، نعره تکبیر. یو عجبه نعره واورئ، یو عجبه نعره واورئ. تاریخ طالبان، تاریخ اسلام، تاریخ طالبان، تاریخ اسلام.